और सरकार की तरफ से अरुण जेटली इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। What the next step Sir, is. I have one more question, sir. When you are talking about improved situation in the Rajya Sabha, will that create a rethink in the government on the GST bill to bring it in when things are more conducive, the numbers are better? Dekho, don't expect me to reveal the entire strategy at this stage. Sir, after the budget session, you said that we are cutting too fine on the GST bill. Now the time is much lesser than what we had after the budget session. What will be the core of your strategy for GST bill, sir? Well, as I said, I am not giving you in so many words what's going on in our minds. But I've just answered the first question that the CCPA has decided not to prorogue the session as yet. Yes. So we will make our own assessments. Sir, as you have said, no decision has been taken when to prorogue the House. Does that mean that you are planning to extend the current session to pass the GST? देखिए कुछ विषय हम आपके स्पेक्युलेटिव जर्नलिज्म के लिए भी छोड़ते हैं. If GST bill comes in winter session, you think you will still be able to meet the deadline of April 2016? It will become extremely difficult. Mr. Venkat. Arunji, I asked for a very simple submission. You made some allegation against Congress Parivar in Hindi, which I wanted in English, which you diverted जानबूझ के आपने दूसरा इशू को लेके आपने ट्रांसलेट किया था. Number one. हिंदी में तो सवाल पूछ रहे हो. Sir, number two, GST is a very important issue as far as Tamil Nadu is concerned. What kind of a solution you are going to give it to the government of Tamil Nadu? देखो, Tamil Nadu, the amendment, the only amendment suggested by the select committee that government will take care of any loss for 5 years has been accepted by the government. We will ensure that no state, least of all Tamil Nadu, has any revenue loss on account of GST. If it is, we will fully compensate it. Sir, on the first one regarding Congress Parivar. Please, because the people of Tamil Nadu also want to know what is the Parivar. You see, I have clearly said that they have not been able to digest the fact that one family is out of power. And therefore, the entire battle for policy, the somersault on policy, is essentially because of that one factor. Arunji, all through these 3-4 weeks of the session, we kept hearing from the Congress that whatever they were doing was actually repeating what your party had done in the past, in the 2 terms of the UPA regime. They kept using the idiom tit for tat every time we spoke to them. Do you think the present situation that we have just seen, your party and your leaders and your strategies may have had something to do in what we have seen? Because they quoted leaders from your party, including you. I have 2 responses to give. The first is, I have already said that some people immature as they grow. And secondly, are these equivalent examples? The auctions have now proved that the 1,76,000 crore and the 1,86,000 crore estimate that the CAG gave for spectrum and coal was an understatement. Forget zero loss, forget overstatement, it was an understatement. Subsequent events have proved that. You had FIRs, you had Supreme Court judgments, you had CAG reports, and then you were trying to help the accused and the beneficiaries of this corruption. उसको आप कंपेयर करो, उसकी तुलना करो
with what happened just now. And when the whole thing is finally debated, you find yourself on a very, very weak footing. Jaitley ji, if a special session is called, the numbers in the Rajya Sabha will still remain the same. So how, what will be your strategy? You see, I am not saying anything on whether session will be called or not called. We have to take a decision. The numbers on a GST constitution amendment as they stand today suit the amendment. मुझे उस दोनों का ताल्लुक क्या लिखता है? मुलायम सिंह जी का क्या ताल्लुक है उससे? वो तो कोई अधिकारी पकड़ा गया है। कांग्रेस क्या आरोप लगा रही है उन पे? सर, हमारी जानकारी में आया नहीं और कांग्रेस तथ्य बता दे हमें तो। अरुण जी, सर मेरा सवाल है, आप लोगों ने कांग्रेस को संसद के भीतर कॉर्नर करने की, अलग थलग करने की पूरी कोशिश की, आप काफ़ी हद तक इसमें सफल भी रहे, लेकिन बाद में जाकर के तीसरे फ्रंट के नाम पर शरद पवार की लीडरशिप में सब लोग जाके खड़े हो गए। मुलायम सिंह ने भी जाकर के अल्टीमेटली जाति के आधार पर जनगणना की मांग कर डाली। आपको ऐसा नहीं लगता कि सारे दल अल्टीमेटली सब लोग फिर से जाकर के तीसरे पाले में जा रहे हैं? देखिए, तीसरा पाला क्षेत्रीय दलों का है और अधिकतर क्षेत्रीय दल उन राज्यों के हैं जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं और अपने राज्यों की आर्थिक और राजनीतिक मजबूरी की वजह से, क्योंकि उन राज्यों को लाभ होना है, ये सभी राज्य हमसे भी ज्यादा वोकल सपोर्टर्स हैं जीएसटी के। सो वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, all these states are strong votaries of the GST because they are all consuming states, and consuming states are the eventual beneficiaries. And Mr. Sharad Pawar is a very loud supporter of it himself. बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप चाय के लिए आमंत्रित हैं। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली को आपने सुना। बड़ी बात यह कही है कि 1 अप्रैल 2016 तक जीएसटी बिल लाकर रहेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर विंटर सेशन में लाते हैं तो फिर मुश्किल होगी, लेकिन साथ ही अरुण जेटली ने निशाना भी साधा कांग्रेस के ऊपर। लेकिन बड़ी बात, 1 अप्रैल तक जीएसटी लाकर रहेंगे, ये अरुण जेटली ने कहा। कांग्रेस की वजह से संसद में काम नहीं हुआ है, 1 अप्रैल तक जीएसटी बिल लाकर रहेंगे। लेकिन उनसे जब सवाल पूछा गया अगर विंटर सेशन में लाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, अगर विंटर सेशन तक अगर इसको टाला जाता है तो फिर 1 अप्रैल से अगर इसको रोल आउट करना मुश्किल होगा, तो फिर लेकिन क्या विशेष सत्र बुलाया जाएगा, ये सत्र को बढ़ाया जाएगा? उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजी का खुलासा मैं अभी नहीं करूंगा। मुलायम सिंह यादव के रुख पर भी उनसे सवाल पूछा गया कि जब यादव सिंह जो नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी, उनको जब पकड़ा गया, उन्होंने कहा कि अधिकारी पकड़ा गया, उसका मुलायम सिंह यादव से क्या लेना देना। सिलसिलेवार तरीके से तमाम आरोपों के जवाब दिए। उन्होंने ये भी कहा कि एक परिवार के हाथ से सत्ता निकल गई, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसी वजह से संसद में इस तरह का गतिरोध पैदा किया गया। और अब कांग्रेस के इस रवैये को लेकर देश की जनता के बीच जाएगी पार्टी, और जितने भी जो संसदीय क्षेत्र हैं, 44 कांग्रेस के, 9 लेफ्ट के, उन संसदीय क्षेत्रों में अब प्रचार किया जाएगा कांग्रेस के इस रवैये के खिलाफ।